First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture, we shall discuss the Euler's Totient function, definition of the Euler's Totient function, formula for the Euler's Totient function, and problems based on the Euler's Totient function. See this is actually our fourth unit. In that fourth unit, we have to discuss, we have to study these different functions. Actually, इस लास्ट यूनिट में, ये थर्ड फोर्थ यूनिट में हमें खाली डिफरेंट फंक्शंस, उसके डेफिनेशंस, उसका टेबल्स, यही हमें डिस्कस करना है. सो in the Euler's Totient function, we have to, in this lecture, we have to discuss the concept regarding the Euler's Totient function. Previously, we have seen, in the last lecture, we have seen the Mobius function phi of n. What is the definition of the Mobius function? These are the different arithmetic functions. What is the arithmetic function? The number theory often consists of sequences of real or complex numbers. In number theory, such sequences are called as arithmetical functions. Or a definition, a real or complex valued function defined on the positive integer is called as an arithmetic function. In that arithmetic function, first of all, we have to know, we shall discuss the Mobius function, which is denoted by mu of n. The Mobius function mu of n is defined as mu of 1 is equals to 1, or you can use this definition directly. If n is greater than 1, we can write n is equals to p1 raised to a1, p1 means first prime raised to a1, p2 raised to a2, p3 raised to a3, pk raised to ak. Value of mu of n is equals to 1, if n is equals to 1. Value of mu of n is equals to minus 1 raised to k, if a1 equals to a2 equals to a3 equals to ... equals to k. अगर all a1 a2 a3 equals to 1 होते हैं, तो we can write mu of n is equals to minus 1 raised to k. And other than this, अगर a1 equals to a2 is not equals to a3 is not equals to a4 is not equals to whatever may be, these are the different values, then in that case the value of mu of n is always 0. Otherwise, these are the note regarding the mu of function, Mobius function. लास्ट लेक्चर में हमें ये थ्योरम हमारा रह गया था, थ्योरम का प्रूफ रह गया था, मोबियस फंक्शन पे बेस्ड इस थ्योरम का प्रूफ हमें डिस्कस करना है. नाउ सी दिस, व्हाट इज द थ्योरम हियर. एक्चुअली if n is greater than 1, then prove that summation over d divides n, mu of d, Mobius function, mu of d is equals to box of 1 upon n. You know box function means greatest integer but not greater than n. Box n का मतलब क्या होता है? Greatest integer but not greater than n. Some examples we have also discussed in the last lecture. So, the value of summation over d divides n mu of d is equals to 1 if n is equals to 1, and the value of d divides n mu of d is equals to 0 if n is greater than 1. See this? The formula is true for n is equals to 1. अगर आप देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, अगर n is equals to 1 पुट अप करते हैं तो वैल्यू ऑफ d डिवाइड्स n, mu of d, in place of n put the value 1. So box of 1 divided by 1, box of 1, value of box 1 is 1 because greatest integer
but not greater than 1 is again 1. Suppose n is greater than 1, अगर n 1 है तो दिस समेशन की वैल्यू 1 आती है, लेकिन n अगर ग्रेटर देन 1 है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मोबियस फंक्शन वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू p1 रेज टू a1 p2 रेज टू a2 p3 रेज टू a3 डॉट 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 इनटू pk रेज टू ak, वेयर p1 p2 p3 आर द डिस्टिंक्ट प्राइम्स. यहाँ पे p1 p2 p3 क्या होता है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स होते हैं. मग इन द समेशन d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d only non-zero terms come from d is equals to 1 and from these divisors of n which are the product of distinct primes. See this, यहाँ पे क्या होता है, in the summation d divides n mu of d only non-zero terms come from d is equals to 1 and from these divisors of n के डिवाइजर कौन से होते हैं, उसमें से प्राइम्स में which are the product of distinct prime. Therefore summation d divides n mu of d is equals to mu of 1 plus mu of p1 in plus mu of p2 plus mu of p3 dot 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 mu of pk. Again the product plus mu of p1 into p2 plus mu of p2 into p3 mu of p3 into p4 dot 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 mu of pk minus 1 into pk plus dot 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 in this way. Again mu of p1 into p2 into p3 into mu of p1 comma p2 p3 p4 p5 इसका प्रोडक्ट है. यहाँ पे सी दिस, यहाँ पे we shall write the product, कॉमा नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट p1 into p2 into p3 dot dot dot, ये कॉमा नहीं है, p1 into p3 dot 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 pk. So by using the summation formula, by using expansion, we can write mu of 1 is equals to 1. This can be written as a combination k1 into minus 1 raised to 1, k की जगह पे 1 plus k2 kc2 minus 1 raised to 2 plus dot 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 kck, k means combination, minus 1 raised to k. This is the expansion as like a minus b bracket raised to n. So यहाँ पे ये भी 1 है और b भी 1 है, so 1 minus 1 raised to k, a minus b bracket raised to n, 1 minus 1 raised to k. So 1 minus 1 means 0, 0 raised to k, which is equals to 0. This proves that the summation d divides n mu of d is equals to 0. Okay. अशा पद्धतीनं हे आपण समेशनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो, हे थेरम प्रूव्ह करू शकतो. दॅट इज समेशन ओवर डी डिवाइड्स n म्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 1 अपॉन n. इसका मतलब होता है विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर n इज ग्रेटर दॅन 1. कंडिशन कोणती आहे, d डिवाइड्स n. ओके. Now we shall start the next function. We shall define, we shall write the concept regarding the next function, the Euler Totient function. The Euler Totient function, which is denoted by phi of n. See this. This is the second type of a function. This theorem is based on a Mobius function. हा जो theorem आहे, this definition is also defined based on the Mobius function. Now we shall discuss the next function, that is Euler's Euler Totient function, okay, which is denoted by phi of n. Now write down the definition.
definition of the Euler's Totient function: if n is greater than 1, the Euler Totient function phi of n is defined to be the number of integers positive integers not exceeding n, which are relatively prime to n, relatively prime to n. Therefore, phi of n is equals to summation over k is equals to 1 to n summation prime 1, summation prime. So, here where, see this, where dash, this dash indicates that the sum is extended over those k relatively prime to n, relatively prime to n. See this, we can write this relatively prime. So, here in this case phi of n is a function from n to n, whose domain is n, whose range is n. See this, we shall define, again we shall write the Euler's Totient function. What is meant by Euler's Totient function here? Actually, the Euler Totient function is denoted by phi of n. What is meant by phi of n? How to define the phi of n? See this, if n is greater than 1, the Euler's Totient function, which is denoted by phi of n and is defined to be a number of positive integers, the number of positive integers not exceeding n, which are relatively prime to n. We have to find out the number of integers which are relatively prime to n, but not greater than n, and that integer must be positive. See this is a main definition, relatively prime to n. So, phi of n is equals to summation over k is equals to 1 to n, summation prime 1. So, here in this case dash, what is the dash? Dash indicate that sum is extended over those k relatively prime to n. So, we can write this also, see this, which is equals to, यालाच आपल्याला असं सुद्धा लिहिता येतं, summation k is equals to 1 to n
1 upon that is a box of n comma k, relatively prime n comma k. ओके, आता याचं एक्झाम्पल घेतल्यावर तुम्हाला डिटेलमध्ये लक्षात येईल. यू विल परफेक्टली अंडरस्टँड दिस बाय द one of the examples regarding the Euler Totient function. ओके, आता Euler Totient फंक्शनचा आपण एक्झाम्पल घेऊ. सी दिस, construct the Euler Totient function table for n is equals to 1 to 10. ये देखो, as like a Mobius function, we have to also construct the Euler's Totient function for n is equals to 1 to 10. लेकिन यहाँ पे फिर से आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे. If n is greater than 1, then the Euler's Totient function, which is denoted by phi of n and which is defined to be the number of positive integers. हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढना है. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, विच आर नॉट एक्सीडेड n and relatively prime to n. म्हणजे असे नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है. उस नंबर ऑफ इंटीजर को हम फाई ऑफ एन बोलते हैं. फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन ओवर के टू एन ओवर प्राइम 1, विच इज इक्वल्स टू समेशन ओवर के इज इक्वल्स टू 1 to n बॉक्स ऑफ 1 अपॉन n कॉमा के, मीन्स रिलेटिवली प्राइम n कॉमा के. सो आता याचं एक्झाम्पल घेऊ. We shall construct this. Number 1, for n is equals to 1, then phi of 1 is equals to, अभी positive integer means first positive integer is 1. First positive integer is 1. GCD of 1 comma 1 is equals to 1. मीन्स 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू 1. अगर यहाँ पे n 1 कंसिडर करते हैं तो 1 से लेस देन और इक्वल्स टू बट नॉट ग्रेटर दॅन 1. पॉझिटिव्ह असे इंटीजर घ्या 1 पेक्षा मोठे नसले पाहिजेत, विच आर नॉट ग्रेटर दॅन 1, आणि प्राइम टू, रिलेटिवली प्राइम टू 1, म्हणजे जीसीडी 1 असणं गरजेचं आहे. 1 आणि 1 चा जीसीडी 1 असतो. अशा इंटीजरची संख्या किती आहे? 1 आहे. अशा इंटीजरची संख्या किती आहे? 1 आहे. सेकंड, n इज इक्वल्स टू 2. आता n इज इक्वल्स टू 2 मध्ये किती इंटीजर्स असतात पहा? नॉट ग्रेटर दॅन 2, 1 आणि 2 इंटीजर्स आहेत. इफ वी टेक n इज इक्वल्स टू 2, देन देयर आर 2 पॉझिटिव्ह इंटीजर्स, विच आर दोज 1 and 2. देयर आर 2 पॉझिटिव्ह इंटीजर्स, विच आर दोज 1 and 2. अभी इस 2 से जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 1 इज 1, जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 2 इज इक्वल्स टू 2. दिस इज नॉट अलाउडेड. अभी यहाँ पे ये अलाउड नहीं होता है, ये अलाउड नहीं होता है यहाँ पे. दिस इज नॉट अलाउडेड. सो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? आउट ऑफ दीज 2 इंटीजर्स, 2 आणि 1 इंटीजर पैकी एकच इंटीजर असा आहे की ज्याचा जीसीडी 2 सोबत 1 येतो, म्हणजे रिलेटिवली प्राइम. 1 हा 2 सोबत रिलेटिवली प्राइम आहे. म्हणून असे किती इंटीजर्स आहेत? एकच इंटीजर आहे. म्हणून फाय ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, फाय ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1. ओके, आता ते थर्ड सांगा रे. थर्ड नंबर, सी दिस, n इज इक्वल्स टू 3, फाय ऑफ 3. आता पहा, थोडं विचार करा इथं. 1 minute. How many integers, positive integers, which are not greater than 3?
there are 3 integers, 1, 2, 3. There are 3 integers which are not greater than 3. We have to find out, see this, according to the definition, the number of positive integers which are relatively prime to n. How many number of positive integers? How many positive integers which are not greater than n and relatively prime to n? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3 से नॉट ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर कौन से 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. दीज आर द 3 इंटीजर्स विच आर पॉजिटिव एंड नॉट ग्रेटर देन 3. अभी इसका जीसीडी देखना है. वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द रिलेटिव प्राइम्स, number of relative primes. So GCD of 1, 3 is 1. GCD of 2, 3 is equals to 1. Third, GCD of 3, 3 is equals to 3. So this is not allowed yet. अभी ये थर्ड अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे ये थर्ड अलाउड नहीं होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक GCD of 2, 3 is 1, 1, 3 is 1. इसका मतलब है अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो वहां पे n से ग्रेटर ना होने वाले पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम, 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होने वाले कितने इंटीजर्स है वहां पे, 2 इंटीजर्स है. दैट आर 1 and 2, 2 इंटीजर है, इसलिए इसकी वैल्यू आती है 2. इसकी वैल्यू कितनी आती है रे स्टूडेंट्स, 2 आती है, 2. बराबर है क्या, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2. ओके. नीता चौहान, रोहिणी लकाड़, क्रांति सूर्यवंशी. ओके. नाउ 4. चलो रे स्टूडेंट्स अभी बताओ, n इज इक्वल्स टू अगर 4 लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर का प्रॉब्लम ले लो, n इज इक्वल्स टू अगर आप 4 लेते हैं तो क्या होता है, 5 of 4. How many integers which are not greater than 4? There are 4 integers. Which are those? See this here, 4 integers, 1, 2, 3, 4. अभी उसमें से not greater than 4 यानी कि 4 तक ही पॉजिटिव इंटीजर लेना है. तो उसमें से हमें how many select? We have to select only द रिलेटिवली प्राइम इंटीजर. 4 का 1 से रिलेटिवली प्राइम अगर 1 होता है, ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, इसका मतलब कितना होता है रे, 2. बराबर है 5 of 4 इज इक्वल्स टू 2. कितने इंटीजर्स होते हैं, 2 इंटीजर होते हैं. 4 से लेस आने वाले 2 इंटीजर्स होते हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 4. हाउ मेनी इंटीजर्स, 4. नेक्स्ट चला फर्स्ट, this is Euler's Totient function. Okay, n is equals to 5. n is equals to 5. अगर n is equals to 5 है तो यहां पे कितने इंटीजर्स होते हैं, हाँ बताओ रे, 1, 2, 3, 4, 5. अभी हर एक का जीसीडी लेना है. 1 का 5 से जीसीडी 1 आता है, 2 का 5 से जीसीडी 1 आता है, 3 का 5 से जीसीडी 1 आता है, 4 का 5 से जीसीडी 1 आता है, और 5 का जीसीडी 5 से 5 आता है, ये नहीं आता है. तो हाउ मेनी इंटीजर्स वी विल गेट. हाँ चला रे सांगा. अरे स्टूडेंट्स किती वेळ लावताय तुम्ही, 4 आता है. सूर्यवंशी पूजा 5 नाही येणार, 4 येणार. 5 चा जीसीडी 5 सोबत घेतला तर किती येतो, 5 येतो, पण तो रिलेटिवली प्राइम नाही आहे. 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5, 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5, 3 is relatively prime to 5, 4 is also relatively prime to 5. Means how many integers are there? There are 4 integers which are relatively prime to 5. So phi of n is equals to 4. According to the definition of the Euler's function, phi of n means the number of integers, number of positive integers which are not greater than 5
नॉट ग्रेटर देन n एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, यही डेफिनेशन आहे. हां चला आता सांगा बरं स्टुडंट, तुम्ही सांगा. आता मी आन्सर सांगणार नाही, तुम्ही सांगायचे. n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 6 ची वैल्यू सांगा. फाय ऑफ n मीन्स फाय ऑफ 6. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये है पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 6. अभी इसमें से रिलेटिवली प्राइम 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम आने वाले देखो 1 आता है, 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू 6, 2 इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू 6, 3 is not relatively prime to 6 because GCD of 3 comma 6 is equals to 3. 4 is not relatively prime to 6 means GCD of 4 comma 6 किती येतो रे? 4 comma 6 चा रिलेटिवली प्राइम किती असतो? 4 आणि 6 चा GCD 2 असतो, म्हणून दिस इज नॉट. GCD of 5 comma 6 is 1 म्हणजे हे येणार. So we can take 5. 6 is not, means how many integers are there? There are 2 integers which are relatively prime to 6 but not greater than 6. Okay, so 5 of 2 is equals to 6. 7, n इज इक्वल्स टू 7. अगर आप n इज इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो चलो स्टूडेंट्स अभी बताओ रे मुझे. क्रांति सूर्यवंशी, आदित्य कानडे, वेरी गुड. नीता चौहान, ऋषिकेश उदगीरकर, सुभद्रा अनिल स्वामी, पूजा सूर्यवंशी, किरण जाधव, गायत्री पांढरे, प्राजक्ता कदम, वेरी गुड. नाउ यू टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी how many integers, positive integers which are not greater than 7. There are 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 integers. But for the Euler's, according to the Euler's definition, we have to select only those integers which are relatively prime to this, means 5 of 7 which is equals to 1 का रिलेटिवली प्राइम 1 होता है, 7 के साथ 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 नहीं होता है. यानी कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? वेरी गुड. सौरभ वाडे, व्हेरी गुड. ऋषिकेश उदगीरकर, या दोघांचा आन्सर सर्वात अगोदर आलं पहा, म्हणजे फास्ट आहेत. सुभद्रा स्वामी, व्हेरी नाइस. सो हाउ मेनी? We can write 5 of 7 is equals to 6. 8. हाँ चला आता n is equals to 8 चं सांगा रे. मोनिका गोराळे, किरण जाधव, सारिका देशमुख. 5 of 8 is equals to, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 which is not greater than 8 and positive. 1 का इंटीजर कितना आता है? ये आता है 1. 2 नहीं आता है. 3 का GCD 8 के साथ 1 आता है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम. 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 8. 4 इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू 8. 5 इज रिलेटिवली प्राइम टू 8. 6 इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू 8. 7 is relatively prime to 8. 8 is not relatively prime to 8. Means how many integers, positive integers are there? 1, 2, 3, 4. So we can write 5 of 8 is equals to 4. Very good. Puja, Suryavanshi Puja, Puja Mane, Aditya Kanade, Subhadra Swami, Saraswati Shinde, Sarika Deshmukh. Very good. Abhi next, n is equals to 9. So 1, 2, 3 देखो कितना आता है रे स्टूडेंट्स? 5 of 9 is equals to 1. 1 is relatively prime, 2 is relatively prime, 3 is not relatively prime, 4 is relatively prime, 5 is relatively prime, 6 is not relatively prime to 9, 7 is relatively prime to 9, 8 is relatively prime to 9,
9 is not relatively prime to 9. So how many integers are there which are relatively prime to 9 and that are positive but not greater than 9? How many integers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So phi of 9 is equals to 6. Then last, for n is equals to 10, phi of 10 is equals to, अभी देखो, 1 is relatively prime to 10, 2 is not relatively prime to 10, 3 is relatively prime to 10, 4 is not relatively prime to 10, 5 is not relatively prime to 10, 6 is not, 7 is relatively prime, 8 is not relatively prime, then 9 is relatively prime to, and 10 is not relatively prime. Very good. Monica Gorale, very good. Rushikesh Udgirkar, Saurabh Wade, Nikita. Saurabh Wade, चुकलं बघ तुझं. पूजा आटोळकर, व्हेरी गुड. किरण जाधव, पूजा माने, रॉंग झालं तुझं. शिल्पा दुबे, रॉंग झालं. नीता चव्हाण, व्हेरी गुड. गायत्री पांढरे, रॉंग झालं. आदित्य कानडे, व्हेरी गुड. सो phi of 10 is equals to 4. In this way we obtain the relatively prime numbers. Okay, how many numbers are there? These are the 4 numbers. So therefore the table for Euler Totient function n phi of n, अभी देखो कितना है. Phi of 1 is 1, phi of 1, 2 is 1, means 1, 1, 2, 2, 1 is 1, 2 is 1, 3 is 2, 4 is 2, 5, 6, 7, 8, 9 and thus 10. अभी 4 हो गया. 5 का 4, 2, 6, 4, 6, 4, 4, 2, 6, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 6, 4. Thus we can obtain. जयश्री देवके, 8 काय रे? 8 काय आणली तू? 8 कुठला आहे बघ? 8 काय म्हणते? 8 हा, अशा पद्धतीनं हा ऑयलर्स टोशन फंक्शन आपण डिफाइन केलेला आहे. 10 for n is equals to 1 to 10. Construct the Euler Totient function table for n is equals to 1 to 10. This is the Euler Totient function for n is equals to 1 to 10. Okay, समजलं का रे स्टुडंट्स? Euler Totient function ची काय डेफिनेशन सांगते पहा. The Euler Totient function which is denoted by phi of n and which is defined as the number of positive integers which are relatively prime to n but not greater than n. म्हणजे n सोबत रिलेटिव्हली प्राइम इंटिजर असलेले काढायचे. n सोबत रिलेटिव्हली प्राइम असलेल्या इंटिजरची संख्या किती आहे पाहायचं, बट विच इज नॉट ग्रेटर दॅन n. n पेक्षा मोठे नाही घ्यायचे, n पेक्षा मोठे नको, n पर्यंतचे, n लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू n. सो ओके. जयश्री देवके 5 काय काढली तू आन्सर? थोडं एक्सप्लेन कर बरं. 5 काय आहे तुझा आन्सर देवके? कशाचा आन्सर 5 काढून इनबॉक्समध्ये टाकली मला सांग ना, मला लक्षात नाही येत. ओके, समजलं का रे? ऑयलर टोशन फंक्शन कसं कॅल्क्युलेट करायचं? काही नाही, खूप सिंपल आहे. द कन्सेप्ट ऑफ ऑयलर टोशन फंक्शन इज व्हेरी सिंपल. ओनली वी हॅव टू काउंट
the positive integers which are relatively prime to n, which are relatively prime to n, and which is defined as Euler's Totient function phi of n. But note that positive integer must not be greater than n. जो भी हम relatively prime integer select कर रहे हैं ना, वो n से greater नहीं होना चाहिए, वो n से greater आपको लेना नहीं है। इसी तरह से आपको relatively prime integer select करना है। चलो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, आपको मैं ये फार्मूला भी बता देता हूं। नेक्स्ट वी शैल सॉल्व दिस। नोट, ये डेफिनेशन ले ली क्या रे? डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन ओवर k इज इक्वल्स टू 1 to n प्राइम ऑफ समेशन प्राइम 1 समेशन डैश 1, which is equals to summation k is equals to 1 to n box of GCD of n comma k 1 upon GCD of 1 comma k याचं समेशन घ्यायचं, म्हणजेच आपल्याला फाय ऑफ n मिळेल। चला नोट, the Euler Totient function having a relation phi of n is equals to काय पहा, phi of n is equals to n into the function pi, product function which is denoted by product, p divides n 1 minus 1 upon p। ये देखो, इस फॉर्मूला के आधार पे we can find the Euler Totient function. This is a first note. Second note, phi of n is equals to number of, दूसरा नोट, number of integers, number of positive integers, number of positive integers k which are, शॉर्ट मध्ये लिहू, number of positive integers k such that GCD of n comma k is equals to 1 and k is less than or equals to 1। इस तरह से भी हम ऑयलर टोशन फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स k which are the number of positive integers k which are this। okay, now next third, अभी ये देखो, ये जो फर्स्ट नोट है, phi of n is equals to n into the product function pi of 1 minus 1 upon p over p divides n over p divides n। इसी तरह से ये फॉर्मूला यूज करके भी हम यहाँ पे ऑयलर्स टोशन फंक्शन निकाल सकते हैं। अभी इस फॉर्मूला, सी दिस, now we can find the Euler Totient function for the different values of n by using this formula। अभी हमें क्या करना है, Euler Totient function निकालना है, phi of n निकालना है by using this formula। ओके,
Now write down this. First, find phi of 343. Answer here, n is equals to 343. So we have to find the p, number of p. So therefore n is equals to 343, which is equals to p raised to m. That means we can write n is equals to 7 raised to 3. So therefore n is equals to 343, p is equals to 7, m is equals to 3. So therefore we have phi of n is equals to n into pi over n divides d. What is that? P divides n. P divides n, 1 minus 1 upon p. So therefore phi of 343, which is equals to, n means 343 into product p divides d. P means 7 divides 343, 1 minus 1 upon p means 7. So we can write 343 into pi means the product. So we can write pi of 7 divides 343 into 1 minus 1 by 7 means 6 by 7. That means phi of 343 is equals to 343 into 6 by 7. That is equals to, किती येतो पहा बरं रे, 49 into 6, that means 294. This is the phi of 343. Thus we can obtain the value of phi of 345. मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहां पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका रिलेटिवली प्राइम 343 से how many integers are there? There are 294 integers. There are 294 integers. For example, we can find second similarly way. Example, find phi of suppose 8. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? phi of 8 निकालना है by using this formula. See this, we have to use that method, we have to use this formula. phi of 8 निकालना है, we have to use this formula. तो यहाँ पे n is equals to, here n is equals to 8. इसका मतलब क्या होता है? n is equals to 2 raised to 3 means p raised to m. Here therefore this implies that n is equals to 8, p is equals to 2, p means prime, note that p means prime, m means its index, and n is equals to suppose 3.
Now we have phi of n is equals to n into pi over, pi means the product function, pi over p divides n 1 minus 1 upon p. So phi of 8 is equals to n की वैल्यू 8 लिखना है into pi of p divides n means 2 divides 8, 1 minus 1 upon p, p का मतलब कितना है रे 2, so 8 pi of 2 divides 8 in a bracket कितना आता है रे 1/3, sorry 1/2, so 8 into 1/2 means कितना होता है रे 4, so we get phi of 8 is equals to 4, phi of 8 equals to 4, बराबर है क्या। अभी इसको हम वेरीफाई करते हैं, ये देखो phi of 8, this phi of 8 we have obtained by using the formula of a product function। हमने ये phi of 8 की वैल्यू फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन से कैलकुलेट किया है, वो कितने आई है 4, बट हम अगर यहाँ पे टेबल पे देखते हैं, ये देखो टेबल पे भी देखो, अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम से भी अगर आप निकाल दिए तो phi of 8 की वैल्यू कितनी आती है 4 आती है। सो वी कैन ऑब्टेन द Euler Totient function by using the formula of a product function, that is phi of n is equals to n into pi over p divides n 1 minus p। समजलं का रे, हा फॉर्म्युला आहे Euler Totient फंक्शन फाइंड आउट करण्याचा हा फॉर्म्युला आहे सेकंड मेथड। कारण जेव्हा n ची व्हॅल्यू लार्ज असते, व्हेरी लार्ज असते, त्यावेळेस आपल्याला एक एक टर्म रिलेटिवली प्राइम घेऊन पाहू शकत नाही। 10 पर्यंत ठीक है, 11, 12, 20 पर्यंत ठीक है, 20 पर्यंत वी कैन फाइंड। अगर उसके ज़्यादा है, बहुत बढ़िया वैल्यू है, n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 है, 200 है, 300 है, तो हमें 1 by 1 अगर आप रिलेटिवली प्राइम लेते हैं तो बहुत देर लगता है उसके लिए। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमेशन प्रोसेस, सो टू अवॉइड दिस वी कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। ओके, now in this way phi of 343 we can obtain this. Similarly we can find third problem, find phi of 4300। ओके, हाँ समजलं का प्रोसेस कशी आहे। phi of जर लार्ज टर्म असतील तर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरा। सी दिस, now here n is equals to 4300। अभी इसको फैक्टराइज में कन्वर्ट करो, प्राइम इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसको प्राइम में कन्वर्ट करना है। मीन्स 43 इज प्राइम इंटू 100, बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स। 4300 कैन बी रिटन एज अ 43 into 100 easily। 43 is a prime number, so one factor may be 43। now again we have to divide 100 into the product form of a primes। हाँ काय लिहावं लागेल रे सांगा बरं स्टुडंट्स। 43 into 100 means 25 into 4, but 25 is not prime, 4 is not prime, so we can write 43 into 5 raised to 2 into 2 raised to 2। इसका मतलब हो गया 5 is also prime, 2 is also prime, 43 raised to 1। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, 43 is a prime, its power on 5 raised to 2 its power 2, 5 is a prime, 2 is also prime, that can be written as a P1 into P2 into P3। so this is n here, therefore n is equals to 4300, P1 is equals to 43,
P2 is equals to 5, P3 is equals to 2. बरोबर आहे का students? Now we have phi of, I shall write in the next page, phi of n is equals to n into product pi over p divides n, 1 minus 1 upon p. So n into pi over, अभी देखो p के कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, p1, p2, p3 means there are 3 values. So we have to write product p1 means 43 divides 4300, 1 minus 1 upon, so we can write this short मध्ये लिहूयाला p. But here in this case there are 3 values, p1, p2, p3. So p means p1 divides 4300, p2 divides 4300, p3 divides 4300. So we can write this as n means 4300 into p1, 1 minus 1 upon p1 into 1 minus 1 upon p2 into 1 minus 1 upon p3. 4300, 1 minus 1 upon 43. How many divisors are? 3. 43, 5 and 2. So 1 minus 1 upon 5 और दूसरा 1 minus 1 upon 2. हाँ 3 वैल्यूज है, सॉल्व कराता 4300 into क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 42 डिवाइड बाय 43, 4 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 2. इथं किती येईल पहा, 43 1 the 43, इथं येईल 4300. अगेन 5 to the 10, यहाँ पे 10. So 10 into 42 into 4. So कितना आता है रे स्टूडेंट्स, आंसर बताओ इसका प्रोडक्ट कितना आता है. 4 into 8, 168. That is equals to, this is phi of 4300. Phi of 4300. So 1618. See this. Means see here, there are 1680 relatively prime numbers. Relatively prime numbers to the 4300. To the 4300. ओके, अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट करता येतं. तर या पद्धतीने तुम्ही अशा पद्धतीने रिलेटिव्हली प्राइम्स तुम्ही नंबर फाइंड आउट करू शकता. कॅल्क्युलेट करता का रे स्टुडंट्स? ओके, होमवर्क पहा. फाइंड phi of 300, then phi of 125, phi of 1000,
phi of 525. हां, यांचे कॅल्क्युलेट करता येईल का रे आयलर टोशन फंक्शन तुम्हाला स्टुडंट्स? कॅन यू कॅल्क्युलेट? हे परत एकदा सर्वांना सूचना आहे पा, जे विद्यार्थी रेग्युलर क्लास करणार नाहीत, आता आपलं रोज क्लास असेल, रेग्युलर क्लास करणार नाहीत त्यांना मी परीक्षेला बसू दिलं जाणार नाही, बसू देणार नाही, एक लक्षात ठेवा. तर या सर्व फंक्शनचे आयलर टोशन फंक्शन तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, हाऊ टू फाइंड आउट द आयलर टोशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला. वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला फॉर द Euler Totient function. तर ओके, now we shall stop here.